Hello students, this is chemistry session for class 9th and today I am here with the topic evaporation. So today I will discuss what is evaporation and what are the factors which affect the rate of evaporation. So actually in our daily life we can see so many examples. Cloths are dried up in sunshine. When you dry cloth, you have to spread it, okay? And when you keep water in a container, slowly it changes into vapor and then it evaporates, okay? So these are some examples which are related to evaporation. So first of all, we will try to understand what is evaporation. Actually, suppose in a container we have taken water, the molecules of water which are present at the surface these molecules take energy from the surrounding and then change into gas state, okay? Other molecules which have comparatively higher energy that comes to the surface and by getting energy from the surrounding changes into vapor state, okay? So we can say that actually evaporation takes place only on the surface of liquid, okay? The molecules present on the surface, they get energy from the surrounding and they change into vapor state, okay? So evaporation, what is evaporation? It is a surface phenomenon the particles of liquid take energy from the surrounding and change into vapor state. Or change into vapor. So the process of changing liquid into gas state below the
boiling point is called evaporation. Okay. So evaporation is actually surface phenomenon. In this, the particles present at the surface take energy from the surrounding and change into vapor state. So we can define like this: it is a process in which a liquid changes into gas state below the boiling point, means at any temperature below the boiling point. You can write here at all temperatures, all temperature below the boiling point, that is called evaporation. तो evaporation क्या है? एक्चुअली कोई भी लिक्विड जैसे हम किसी कंटेनर में लेते हैं तो इसके सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी वो अपने आसपास से एनर्जी गेन कर लेते हैं। और क्योंकि इन पार्टिकल्स की जब एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाती है तो एनर्जी गेन करने का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ओके, हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, therefore they leave the surface of liquid and change into gas state. Okay, so evaporation is actually surface phenomenon, means evaporation एक surface phenomenon है जो कि बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंजेज इनटू गैस स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग एक अलग प्रोसेस है। बॉइलिंग ऑलवेज टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। ओके, सो देर आर सम फैक्टर्स which are responsible or which affect evaporation. So let us see what are the factors. Number one, surface area. Actually, when we keep the liquid in any container, it has a open surface area. So when we increase the surface area, the rate of evaporation increases. Okay, we can take this example. You can see here, this is cup
And what is this? This is saucer. Okay? Saucer means just like plate, and this is cup. So, if you keep hot tea or milk in the cup or saucer, then in which case the cooling becomes faster. Actually, in the process of evaporation, if there is evaporation, there will be cooling. Okay? So, when we keep hot tea or coffee in the cup and in the saucer, the cup has a small surface area, but the saucer, it has large surface area. So, the hot tea or coffee which is kept in saucer, because of large surface area, it cools faster, means evaporation becomes faster. And as we know, evaporation causes cooling, because in the process of evaporation the particles take energy from the surrounding, and so that causes cooling. So, the hot tea kept in saucer cools faster than cup. Okay? So, in this way, surface area, when we increase the surface area, the rate of evaporation increases. Okay? Second factor is temperature. How does the temperature affect the rate of evaporation? Actually, when the temperature increases, the rate of evaporation increases. You can see in everyday life that in hot sunny day, the things becomes dry faster. Okay? So, when we increase the temperature, the rate of evaporation increases. And third one is humidity. What is humidity? You must have studied in earlier classes. Actually, humidity means water vapor present in the atmosphere. So, it is the amount of water vapor present in the atmosphere. This is humidity. So, when the humidity in the air increases, it decreases the rate of evaporation, means the rate of evaporation slows down on increasing humidity. Means if there is large humidity in the atmosphere, the rate of evaporation decreases. Okay? Nowadays, there is lot of humidity in the atmosphere. So, in these days, you are feeling much uncomfortable, and we all are perspiring more. This is only because of large humidity present in the atmosphere. So, when humidity increases, the rate of evaporation decreases. And the last one is speed of wind. Speed of wind. When speed of wind increases,
then the rate of evaporation increases, because when the wind is blowing, the cloths dried faster. Okay. So, speed of wind, on increasing the speed of wind, the rate of evaporation increases. So, rate of evaporation mainly depends on these factors: surface area, temperature, humidity and speed of wind. Okay. Now, you can take a screenshot of it. Now, as we know, there are 4 factors which are responsible for the rate of evaporation. Number 1 is surface area. The rate of evaporation increases on increasing the surface area. Okay. सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इसका हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक कप है और ये सॉसर है। अगर हमने कप और सॉसर दोनों में हॉट टी या कॉफ़ी रख लिया है तो हम देखते हैं कि हॉट टी जो सॉसर में रखा है वो जल्दी कूल हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉसर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, यानी इसका सरफेस एरिया कप के सरफेस एरिया से ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें फास्ट हो गया, जिससे कि ये जल्दी ही कूल हो गया। ठीक है, क्योंकि इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जहाँ पर भी इवेपोरेशन होगा वहाँ पर कूलिंग होगी, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जब एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहाँ पर कूलिंग होगी। ओके, तो सॉसर में हॉट टी जल्दी कूल हो जाता है रादर देन कप। तो जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। On increasing the temperature, the rate of evaporation increases. Okay, हम इसको देख सकते हैं कि समर सीजन में
जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो क्लॉथ्स ड्राइड अप मोर क्विकली, यानी उस समय कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी सूखने लगती हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। What is humidity? The amount of water vapor present in the atmosphere or present in the air is called humidity. Okay, so when humidity in the air increases, the rate of evaporation decreases. ओके, तो ह्यूमिडिटी क्या है? एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर एयर में ह्यूमिडिटी की अमाउंट अगर इंक्रीज होने लगेगा तो इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में या एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट द एयर कैन नॉट होल्ड वाटर वेपर। एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एयर जो है वो और ज़्यादा मॉइस्चर को या और ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, if the speed of wind increases, the rate of evaporation increases. Okay, it means स्पीड ऑफ विंड अगर इंक्रीज होने लगेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए व्हेन द विंड इज ब्लोइंग द क्लॉथ्स ड्राइड अप मोर क्विकली। ओके, कि जब विंड बहुत तेज चल रही होती है तो उसमें कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स which affect the rate of evaporation. Now you can again take a screenshot of it.
Now today's class is over and we will discuss some examples related to evaporation in the next class. Thank you, students.